Hi everyone. Now question number 18 from your TS Grewal book relating to change in profit sharing ratio of existing partners. Bootstrap and Davy Jones are partners sharing profits in the ratio of 2:1. On 31st March 2024, their balance sheet showed general reserve of 60,000. It was decided that in future they'll share profits and losses in the ratio of 3:2. That means there is a change in the profit sharing ratio of existing partners. Pass the necessary journal entry in each of the following cases when general reserve is not to be shown in the new balance sheet and when general reserve is to be shown in the new balance sheet. So pehla case, let us take the first case. When general reserve is not to be shown in new balance sheet. In new balance sheet, उस केस में हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? ये जो जनरल रिजर्व है कितना है? हाउ मच इज अमाउंट? इट इज 60,000. इट इज 60,000. that we are going to divide general reserve को हम क्या करेंगे? See, general reserve is how much? It is 60,000. And what is the old profit sharing ratio between Bootstrap and what's the other name? Davy Jones. So B/D. I'm just writing the initial, you will write the full name. What is the old ratio? It is 2:1. तो हम इस old ratio में general reserve को क्या करेंगे? दे देंगे partners को. तो how much will we get? We will get 60,000 into 2/3, which is equal to 40,000. And how much will Dave Jones get? He will get 60,000 into 1/3, which is equal to 20,000. Now you have to pass the journal entry. So what is the journal entry? It will be general reserve account debit to, what is the name? Bootstrap. To Bootstrap account to Davy Jones account. How much? यहाँ पे 60,000. How much is Bootstrap getting? 40,000. And how much is Davy Jones getting? 20,000. So being general reserve transferred to B and D, write the names in old ratio of 2:1. So this way general reserve को आपने दे दिया, क्या कर दिया? Partners को दे दिया. In what ratio? Old ratio. Okay. So now general reserve is over. It will not be shown in the new balance sheet. अब second case है when it has to be shown. Second case is when general reserve is to be shown in new balance sheet. In new balance sheet. ठीक है? तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे? What are we going to do? First thing is general reserve कितना है? It is 60,000. अब ये बैलेंस शीट में दिखाई देना चाहिए. ठीक है? So first we will calculate the sacrifice or the gain. ठीक है? B is to D. Old ratio क्या था? 2:1. B is to D. What is the new ratio? It is, I think, 3:2. Yeah, it is 3:2. This is the new ratio. So old ratio and new ratio. So sacrifice again is always equal to old ratio minus new ratio. तो B का कितना होगा bootstrap का? It will be 2/3 minus 3/5. So this is equal to 1/15. ठीक है? 1/15. और D का क्या है? Davy Jones का? It will be 1/3 minus 2/5. So this is equal to 5 minus 6/15, which is equal to minus 1/15. Now, as we are using the formula old ratio minus new ratio, I've already told you, all those who are watching this video, please go back to the playlist of change in profit sharing ratio of existing partners and go to the theory and watch the theory part, okay, first, then do the questions. So, अगर ये positive है, तो this is the sacrificing partner. This is the sacrificing partner. अगर negative है, तो gaining partner. तो gaining partner कौन है? Davy Jones and Bootstrap is the sacrificing partner. ठीक है? तो अभी इसका अभी दिस नेट इफेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं. अभी नेट इफेक्ट के लिए ओनली जनरल रिजर्व इज देयर. व्हाट इज देयर? जनरल रिजर्व है और बाकी कुछ नहीं दिया. तो ये ही आप शेयर करोगे. तो पहले आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करा. उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे शेयर ऑफ बी एंड डी इन नेट इफेक्ट.
ठीक है, इन नेट इफेक्ट, यही अभी नेट इफेक्ट है, दिस इज द नेट इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज नथिंग एल्स इज देयर, और कुछ नहीं दिया, सिर्फ जनरल रिजर्व ही दिया है, तो नेट इफेक्ट ही 60,000 है। तो शेयर ऑफ बी कितना होगा, बी का शेयर होगा 60,000 इंटू उसका 1/15, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 4,000, और डी का शेयर कितना है, 60,000 इंटू 1/15 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4,000, पर बी यहाँ पे, बी इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये ध्यान रखना है, एंड डी इज द गेनिंग पार्टनर। सो अगर, now next thing that you have to notice is the net effect positive or negative? It is positive, 60,000 है, positive है, तो as net effect is positive, therefore what will be the journal entry? The journal entry will be gaining partner debit to sacrificing partner, मतलब Davy Jones account debit to bootstrap अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 4,000, जो आपने यहाँ पे शेयर इन नेट इफेक्ट कैलकुलेट करा है, दैट अमाउंट विल कम, दैट अमाउंट विल कम, ओके, ये यहाँ पे 4,000 आएगा। So this is the journal entry. Okay, in case the general reserve is to be shown, in this case general reserve is to be shown in the new balance sheet, ठीक है, वो नेट इफेक्ट वाला मेथड यूज करना है, नेट इफेक्ट देखो, फिर उसके बाद सैक्रिफाइस और गेन करो, फिर शेयर इन नेट इफेक्ट करना है, और उसके बाद जर्नल एंट्री पास करनी है, आफ्टर सीइंग वेदर द नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दिस इज द जर्नल एंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम योर TS Grewal book, change in profit sharing ratio of existing partners. Meeta, Gopal and Farhan were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. So that means there is a change in the profit sharing ratio of existing partners. On this day, the balance sheet showed deferred advertisement expenditure 30,000, contingency reserve 9,000, goodwill was valued at 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the book of the firm on its reconstitution. So as I've already told you, when nothing is mentioned कि इनको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है कि नहीं, we will assume that they are not to be shown. They are not to be shown in new balance sheet. In new balance sheet, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में इनको नहीं दिखाना है, we will assume that, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या चीजें दी है, सबसे पहले मीता, गोपाल एंड फरहान, what is the old profit sharing ratio? It is 3:2:1. This is the old ratio. What is the new ratio? It is 5:3:2. This is the new ratio. अब इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई है, see, deferred advertisement expenditure, ये कितना है, it is 30,000, ठीक है, then contingency reserve कितना है, 9,000, then goodwill of the firm is valued, this is not existing goodwill, goodwill was valued, see the wordings, it's not written existing goodwill was valued at 4,80,000, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दिस इज द गुडविल वैल्यूड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द सैक्रिफाइस और द गेन, ठीक है, व्हाट इज सैक्रिफाइस और गेन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले मीता का कितना है, ओल्ड रेशियो इज हाउ मच, इट इज 3/6 माइनस 5/10, है ना, 5/10, सो दिस इज इक्वल टू 30 हो गया, 15 माइनस 30, सॉरी 15, हियर इट विल कम 15, या 3 से होगा ना, तो हियर इट्स 0, अंडरस्टूड। अभी मीता के बाद जी, उसका क्या है, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, इट इज 2/6 माइनस 3/10, सो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 9, तो ये हो गया -1/30, -1/30,
दिस इज इक्वल टू 1/30. ठीक है, अभी नेक्स्ट एफ का निकालेंगे. इट इज इक्वल टू 1/6 माइनस 2/10. तो ये हो गया आपका 5 minus 6, which is equal to minus 1/30. Now, as we are using the formula old minus new, so this meta is neither sacrificing nor gaining. ये तो ना ही gaining partner है ना ही sacrificing partner है. Positive है, here it is positive, तो that means sacrificing. That means sacrificing. ये negative है, तो means gaining. Gaining. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमें पता करनी है इज द कॉम्पेंसेशन विच द गेनिंग पार्टनर विल पे द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. कॉम्पेंसेशन टू बी पेड बाय हु इज द गेनिंग पार्टनर? एफ, फरहान, बाय एफ टू जी. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जी है, तो फरहान कितना कॉम्पेंसेशन पे करेगा? इट विल बी सी. कॉम्पेंसेशन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्पेंसेशन? कॉम्पेंसेशन is equal to goodwill into gaining share. Gaining share आपने निकाल लिया है. Goodwill कितना है? It is 4,80,000. So this is equal to 4,80,000 into 1/30. है ना? So this is equal to how much? 16,000. How much? 16,000. तो अभी ये कॉम्पेंसेशन कौन पे कर रहा है? एफ पे कर रहा है जी को. तो नाउ यू विल पास द जर्नल एंट्री. अब आप जर्नल एंट्री पास कर दोगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. एंड व्हाट इज द जर्नल एंट्री? इट विल बी फरहान, आई थिंक इट्स फरहान ओनली, एफ से फरहान और जी से गोपाल. ओके, अब फरहान पूरा लिखना है. फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? इट इज 16,000. तो आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया. गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया. नेक्स्ट, कंटिंजेंसी रिजर्व. कंटिंजेंसी रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हाउ विल यू ट्रीट इट? यू आर गोइंग टू डिवाइड इट. यू आर गोइंग टू डिवाइड बिटवीन पार्टनर्स इन व्हाट रेशियो? ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट ये सेकेंड वाले का ट्रीटमेंट करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ contingency reserve. And contingency reserve is how much? Amount is how much? It is equal to, let's see, 9,000. is equal to 9,000. और old ratio क्या दिया हुआ है partners का? Old ratio is 3:2:1. 3:2:1 is the old ratio of बीटा इज टू एम इज टू जी इज टू एफ का ओल्ड रेशियो ये है. तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री. अब तो एम को कितना मिलेगा इसमें? एम को मिलेगा 9,000. यू विल शो द वर्किंग. ओके, 3/6. तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 4,500. ठीक है, अब जी को कितना मिलेगा? 9,000 इंटू 2/6 विच इज इक्वल टू 3,000. How much will F get? F को मिलेगा 9,000 into 1/6 which is equal to 1,000. Sorry, which is equal to into 1/6, 1,500. So now can you pass the journal entry? The journal entry will be contingency reserve account debit. ठीक है, to Mita's capital account, to Govind capital account, to Farhan capital account. 9,000 मीता को 4,500 मिल रहे हैं. 3,000 गोविंद and 1,500 is given to Farhan. And then you will write the narration being contingency reserve shared between the partners in old ratio. ठीक है, ये लिख देना. Now let's see the third treatment. किसका करना है? The third treatment is treatment of deferred advertisement
एक्सपेंडिचर, ठीक है, और वो कितना है, इट इज 30,000. तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, सी इट इज नॉट, सी इस डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू राइट इट ऑफ इन व्हाट रेशियो, इन ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स, 3:2:1, ठीक है. तो पार्टनर्स आर नॉट गेटिंग इट, तो उनका अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है. तो मीरा विल बियर द, इट्स लाइक अ लॉस, तो मीरा विल बियर द हाउ मच, 30,000 into 3/6, which is equal to 15,000. Then Govind will bear how much? Govind will bear 30,000 into 2/6. It is Govind or it's Gobind? Let me see. It's Gopal. Okay. Sorry. Here just make the change. It's not Govind. It is Gopal. Okay. Gopal. ठीक है. Gopal का it is now how much? It is 10,000. Then Farhan will bear how much loss? 30,000 into 1/6. So this is equal to 5,000. So what will be the journal entry now? Journal entry will be, it will be Meeta's capital account debit. See, their accounts will be debited. Gopal capital account debit. Farhan capital account debit to deferred advertisement expenditure account. 30,000. कितना था? 30,000. So how much will Meeta bear the loss? 15,000. How much? 15,000. ठीक है? तो 15,000. Gopal will bear 10,000 and Farhan will bear 5,000. So ultimately, this is the journal entry for treatment of deferred advertisement expenditure. And then in the narration, you'll write being deferred advertisement expenditure written off among existing partners in old ratio. ठीक है? तो जर्नल एंट्री के बाद नरेशन जरूर लिखना है. So this is the way you'll do the question. ठीक है? ये हो गया आपका कंटिजेंसी रिजर्व का जर्नल एंट्री. And this is the journal entry for your what? Goodwill का treatment. Understood? So this is the way you'll do this question. It's very, very important question. You should always practice it. Very, very important.